Hello guys, hi, welcome back to my channel, and yes, this is Rajesh AZAD and I'm hosting the channel of the Streamline Tutor. Well guys, today I'm gonna wash my bike and I'm gonna share exactly कौन से ideas से और कैसे मैं अपने बाइक को वॉश करता हूँ, वो भी एक बकेट में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी पार्ट्स को छोड़ देता हूँ जहाँ पे ज़्यादा डस्ट है मैं उसको बाद में करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे पार्ट्स को क्लीन करता हूँ and I'll show you exactly what I do and how I do it. So let's not waste the time, I'll show you. As I said, this is full 1 bucket water. ओके एंड दिस इज़ द सोप वाटर। एक्चुअली मैंने इसमें अभी शैम्पू डाला है, मैं इसको एज शैम्पू यूज़ करने वाला हूँ स्प्रे करते करते, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा पानी मेरा वेस्ट ना हो। मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली कैसे क्या करना है। This is all done. Soap, मैंने soap अप्लाई कर दिया है। Now I'm gonna just wipe it out. मैं पानी इसमें से नहीं ले रहा हूँ। अब जितना भी सोप का इसके ऊपर फाउंडेशन बैठा है, मैं उसको धीरे धीरे इसको निकाल दूँगा और इसमें से फिर पानी चेंज कर सकते हैं। So let's do it. यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि अभी तक इसका जो सोप का ऊपर का लेयर्स है वो अभी तक बना नहीं है, फाउंडेशन इसका छूटा नहीं है। So that means we need some more water. So we still have almost इतना ही पानी अभी तक यूज़ हुआ है मैंने, बहुत पानी है। So yeah.
दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सारे आपके बाइकर्स फ्रेंड के साथ में। उनको पता चलना चाहिए कि एक बकेट में भी आपकी बाइक्स और कार इजीली साफ हो सकती है। तो येस, if you haven't subscribed to my channel, please hit the red subscribe button and be a part of my channel. Walk hard, ride sports bike or scooter. Till then, you follow the streamline tourer. Ciao.